हाय सुपर अचीवर्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इसलिए मैं सोचा आज कुछ हम लोग डिफरेंट थिंग डिस्कशन करते हैं विच इज वेरी यूजफुल एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। मैं सोचा चलो एक रियल जॉब उठाते हैं इंटरनेट से। सो 13th जॉब को एक जॉब पोस्टिंग हुआ है इन ए मल्टीनेशनल कंपनी, एक बिग मल्टीनेशनल कंपनी कॉल्ड एमजेन दैट यू कैन सी इन द स्क्रीन एंड अंडरस्टैंड करते हैं what the company actually wants from a student or a candidate. Second है what skills are required for this job and what kind of person will do after getting this job. And last में how to prepare to get this job. अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरे से बन रही 10 से 11 मिनट और 12 मिनट वेरी इंटरेस्टिंग चीज हम फर्स्ट देखेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है, वो डिस्क्रिप्शन का साथ में आपका स्किल लेवल रिक्वायरमेंट क्या है वो सब चीज देखेंगे। 8 स्किल लेवल रिक्वायरमेंट है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो जॉब जो हमने लिया है वो है सीनियर डेटा साइंटिस्ट इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। सीनियर मतलब 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस विथ M.Sc इन बायोटेक्नोलॉजी विद द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। इसमें से क्यों हम लोग लिया है इसको, बिकॉज ये जो हो सकता है कि एक कैरियर डेस्टिनेशन हो सकता है, आप लोगों से किसी को भी एक कैरियर डेस्टिनेशन हो सकता है, सो दैट आई कैन बिकम ए सीनियर डेटा साइंटिस्ट इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। सी इसमें से क्या हम लोग लर्न करेंगे ना, अगर हम लोग को पता है कि वेयर द जॉब्स आर मूविंग तो हम लोग बैकवर्ड मतलब एक प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो चलो देखते हैं पहले व्हाट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन तो मैं बोल दिया, इसका थोड़ा लिटिल बिट बिलो लाइन जाते हैं। एक्चुअली पर्सन जो इस जॉब के लिए जो पर्सन है, ही शुड वर्क एट द इंटरसेक्शन ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन आपका हो गया क्लिनिकल डेटा, जेनोमिक्स एंड प्रिसिशन मेडिसिन। काफी सारा कंफ्यूजिंग लगता है। नाउ लेट्स सी इन ए सिंपल वे, इसको देखते हैं। कंपनी वांट्स द पर्सन शुड टेक लार्ज अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल डेटा और पेशेंट डेटा एंड आंसर these 3 questions. Which patient is more likely to respond to this drug? That means there is a drug and there are patients. How to match? And which patient may develop side effects? Can you discover some biomarker which can help identifying the treatment method? Biomarker means it understands what is happening inside your body. Biological system जो body का है, it understands. That means biology, data, artificial intelligence, everything combined, they are working. You should know how to work with this. Now let us see the job requirements क्या है। फर्स्ट है फंडामेंटल, दैट मीन्स फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी शुड बी स्ट्रॉन्ग। दैट मीन्स यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज RNA, व्हाट इज DNA, व्हाट इज प्रोटीन्स, व्हाट इज सेल, व्हाट इज डिजीज पाथवेज, क्लिनिकल आउटकम्स एंड ड्रग रेस्पॉन्सेस। दैट मीन्स आपका जो एकेडमिक्स है, दी सब्जेक्ट्स, जैसे यू मस्ट बी very clear about these things. It is molecular biology, genetics, cell biology, biochemistry, immunology. क्यों कि जब आप एक एनालिसिस कर रहे हैं डेटा, यू आर द वन हु हैज टू टेक द डिसीजन। डिसीजन इज योर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गिव यू रिजल्ट्स, इट विल प्रोवाइड यू सम ऑप्शंस फॉर योर रिजल्ट्स एंड यू हैव टू टेक द डिसीजन। जब आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होगा, देन ओनली यू कैन टेक द प्रॉपर राइट डिसीजन। Second requirement is genomics and multi-omics. That means you should understand genomics. That means DNA level informations, transcriptions, RNA, then proteomics. That means protein level informations. And you don't need to be an expert in all areas. At least you should know the things how it is working. जो भी आपका academics में मतलब पढ़ाई होगा, यू मस्ट अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। डोंट टू बी एक्सपर्ट, यू जस्ट नो द थिंग्स एंड इंटरप्रेट द थिंग्स। थर्ड इज स्टैटिस्टिक्स।
You cannot avoid this subject, statistics. See, you are studying biotechnology. Technology what? That means there are mathematics, not the core mathematics. You must understand the things. Like statistics, जो भी correlation हो गया, regression हो गया, compounding हो गया, you must understand these things. Fourth है language, that is Python and R. Python is required for data cleaning, machine learning, artificial intelligence, visualizations, automations, and biological data analysis. And R is for frequently used for statistic analysis, genomics, clinical data analysis. And you should not be a software expert or software engineer. You must know the language and know how it works and how you work and how you interpret. You have a fourth requirement. Fifth requirement is critical one and essential one, that is machine learning, the most important skill. Means using data to teach the computer or your system to identify patterns or make predictions. Isn't it? That means, for example, you have data from 5,000 patients. The model may try to predict, right? आपके पास में जो model है, try to predict which patient will respond to drug A. So, which patient will respond to drug A? Maybe it can be applied for cancer classifications, biomarkers, drug response, genomics. And start with basics of machine learning. And sixth requirement is artificial intelligence and large language models. LLM. ChatGPT also a large language models. You have to develop a LLM like ChatGPT, and that can assist. How it is going to assist you? That means research paper analysis, scientific workflows, clinical text analysis. And can AI help scientists to analyze information or better scientific decisions? That's why it is required, large language models. Generative AI, this is the seventh one. Assist in molecular generation, simulation, biological data representation. And scientists to validate the result and everything. And the last one, eighth one, is agentic AI. See, agentic AI is now everywhere. People are talking about agentic AI. मैं भी सोच रहा हूँ एक agentic AI बनाऊं जो कि मेरा सब काम करे, from content creation to refining to thumbnail designing to उसका video editing to video publishing to everything. The AI agent has to do. हो सकता है, nowadays people are making AI agents for many repetitive work. So this is actually, I would say, it is futuristic, and AI agent can perform multiple steps for any process that you develop. That means assuring that possible that you can find a biomarker for any disease. That means what he has to do? Steps: search research papers, retrieve data, analyze the data, compare the genes, generate path, and summarize the finding. This can, an AI agent can do these things. So these are the 8 requirements. There were many requirements, 15 or 16. I think these 8 are main and critical. आप अभी सोच सकते हैं कि ये जॉब के लिए कौन सा स्किल्स में डेवलप करूं. You should not be expert in all areas. And अगर आपको पता है ये रिक्वायरमेंट है, so you start backward planning for this job. इससे भी कोई भी जॉब एक्चुअली होता है, start studying. You can study 10 jobs, 12 jobs, 15 jobs. And one more thing, many times I have told in my videos that you should have a robust or a fantastic or excellent profile, strong profile in LinkedIn and GitHub. Those are your 24/7 but resume. So ये जो LinkedIn है, you can start networking with the company, with the people in that company. वो direct HR को भी आप लिख सकते हैं, cold email लिख सकते हैं. Like I have given you one
Example, no, Rituparna case, how she got a job, 72 lakhs per annum, and she is in third year of engineering. She started asking the company HR, please give me opportunity to prove myself. If you have the expertise, prove yourself, show it in a LinkedIn, in GitHub. Definitely, you can get the job. What you have thought of. Okay, this is all about today's video. If you have any doubt, please ask me. Let's work together for a better career and always think big and achieve your big dream. All the love, all the power.